Hello beautiful girls, welcome or welcome back to my channel Touched by Laiba. Here I am going to share with you wedding day eye makeup look, which is red golden eye makeup. It's a lovely. So let's get started. Here I'm wear this gray contact lenses. Then I'm using Pond's moisturizer cream जिसे मैं अपने पूरे eyelid पर अप्लाई करूँगी एंड ब्लेंड करूँगी. Then I'm taking liquid concealer of a Swiss Beauty in the shade 02 एंड मैं इसे अपने फ्लैट ब्रश के मदद से पूरे अपने eyelid पे कवर करूँगी. Actually it's my first video because I am voiceover in it. So comment me down, did you like or not? After a long time I make a video, but I promise you guys I will make video earlier and earlier. And so yeah, I just blend it all over my eyelid. Now I'm blend it with a damn beauty blender and set it with a purple Be Your Own BFF compact with SPF, and taking the fluffy brush and apply it. So now I am taking the Blue Heaven brow pencil and जिससे मैं अपने eyebrows को fill up करूँगी. It's in a shade black. It's a very creamy and waterproof. Now I'm going to fill my eyebrows. Now I blend it with the spoolie. Now I'm taking the Huda Beauty palette, eyeshadow palette. It's a beautiful shade. Now I'm taking the black shade and take it in a small pencil brush and apply in my crease line and just blend it. Hope you guys watching my videos and like and subscribe. Please do subscribe my channel and share with your friends, guys. And comment me down, okay, which colors do you want in my next video. So in the same palette I'm taking the pink red color in a fluffy brush and apply it above my crease line and just blend it. ब्लैक एंड रेड कलर को अच्छे से ब्लेंड करना है ताकि कोई हार्श लाइंस नज़र ना आए, दोनों कलर एक दूसरे में मर्ज लगे. Taking the same color and blend it. Just blend, blend, blend. Now I am taking the Swiss Beauty concealer in a flat brush and make a half cut crease. It's a very difficult job to make a crease.
मशक्क़तें चालू हैं. Just I make a cut crease and I'm done. Yeah, I'm done. And blend the corners ताकि उसके harsh edges ना दिखे. इसे मैं blend करूँगी. Then I'm taking the same palette, rose gold kind of a shade, and apply it in my eyelid जहाँ मैंने कंसीलर अप्लाई किया था. कमेंट में डाउन गाइज कि आपको ये आई मेकअप लुक कैसा लगा. Then I'm taking the black color and taking the fluffy brush and apply it on my outer V corner just to cancel out the harsh lines. Here I'm done. Then I'm taking the liquid eyeshadow in U shades in the shade of 02 जो कैमरा कवर नहीं कर रहा था. I tried but not yet. So I just apply it. Don't rub it, just tap 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 tap. या सो मैं एक स्मॉल पेंसिल ब्रश की मदद से रेड जो मैंने अब ऊपर जो कलर अप्लाई किया था वही सेम कलर मैं अपने लोअर वाटर लाइन पे अप्लाई करूँगी. या कॉर्नर्स पे ज़्यादा अप्लाई करूँगी. गुड. देन आई एम टेकिंग वाइट काजल. एम एन का वाइट काजल है जो मैं अप्लाई करूँगी अपने वाटर लाइन पर. Yeah, then I'm taking Lakme water resistant eyeliner and I apply it off camera. I tried a wing liner and then I'm use Mars Fabulash mascara. रिसेंटली मैंने इसे परचेज़ किया है फ्लिपकार्ट से. अराउंड 199 में मुझे ये रिसीव हुआ. इट हैव 12 ml quantity and it's a great guys. It's just trust me, just buy it once. It's a waterproof 20 hour long last mascara and waterproof. हाँ इसका ब्रिसल थोड़ा सा बिग है. बिगिनर्स के लिए प्रॉब्लम हो सकती है. लोअर लैशेस के लिए बहुत ध्यान से इसे अप्लाई करना होता है. जस्ट ये आपके लैशेस को इतना अच्छा वॉल्यूम देता है. इतने कम रेंज में इतना अच्छा मस्कारा. वाओ. आई एम फर्स्ट टाइम यूज इट. यस. लोअर लैशेस पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा क्योंकि इसके ब्रिसल्स बहुत बड़ा है. आपके स्किन को लग सकता है जो कि मेरे लग भी गया एंड मेरे स्कार्फ पे भी लगा. या I applied it.
So now I am using mascara highlighter in this shade 03 private show. मैंने इसे भी रिसेंटली बाय किया है, मार्स का हाइलाइटर प्राइवेट शो. इसे मैं अपने ब्रो बोन पे अप्लाई करूँगी. And above the cheeks. And how can we forget the tear duct. So मैं इसे tear duct पे भी अच्छे से अप्लाई करूँगी. Then I'm take the false lashes and apply it on the off camera. Actually I'm done. Yeah, I'm done. So here is the full video of wedding day eye makeup look. So you all guys loved it, and please do share and subscribe to my channel and share it with your family and friends. Please comment me down, do you like or not. I hope you guys enjoy. Thank you. See you later.